should we start the process? Okay, great. You guys will not use any kind of steel and plastic because the properties of salt tend to change when they come in contact with steel and plastic. इसीलिए आप देखोगे this is not, ये देखो पूरा ऊपर तक नहीं भरा है क्योंकि ये स्टील का ढक्कन है, ठीक है, इसको आधा ही भरा है. ये कितना ml जार है, क्या है, ये भी सब मास्टर क्लास में बताऊंगी. दिस इज अ 14 ml टेस्ट ट्यूब. ओके, I will start pouring because I have been in this field, so I as of now do not want any kind of measuring cup and stuff. तो मैं आप लोगों के लिए सिर्फ बताने के लिए I will tell कि मैं कैसे रेशियो डिवाइड कर रही हूँ. I will be taking a 7-7 ratio, 7 this and 7 this. So color is again my choice, but this time I want my bath salt to be completely colored. I will not take 2 mixes. Is that fine with you people? Just one color. Okay, thank you. So I will start pouring my salt. 14 ml है. अगर आप चाहें, for a beginner I will suggest कि आप इतने छोटे प्रोडक्ट से बनाना शुरू करें. I am using soap dyes, but कौन से ब्रांड के हैं, क्या हैं, वो नहीं बताऊंगी प्लीज. अगर आप अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं, my suggestion to you is start with something like this because this is very appealing. इससे ज्यादा अपीलिंग है, ठीक है, और ये इतनी बड़ी क्वांटिटी जल्दी से खत्म नहीं होती है. एंड सिंस यू वांट क्विक बिजनेस, एवरीबडी, मैं भी क्यों ना हूं, आई वांट समथिंग लाइक अ क्विक बिजनेस कि लोग फ्रीक्वेंटली मुझसे बाय करें. सो दिस इज सफिशिएंट, ठीक है. ये या इसके अलावा थोड़े और डिफरेंट मेजरमेंट्स ऑफ टेस्ट ट्यूब्स आते हैं विद कॉक, वो भी बताऊंगी. आप क्या कर सकते हो, यू कैन इनिशियली पोर योर सॉल्ट इन दिस एंड सी के 14 ml कितना आता है. जहां पे ये ब्रिम एंड हो रहा है, दिस इज एप्सम सॉल्ट, जहां पे ये ब्रिम एंड हो रहा है यहीं तक आप सिर्फ फिल करेंगे क्योंकि इसके ऊपर फिर कॉक आ जाएगा लाइक दिस. कैन यू सी it's empty? Okay, I will be wearing my gloves because I don't want my hands to ruin. Okay, I have, yes. Okay, make sure your lids and everything are tightly secured because the moment the salt comes in contact with air or water, गांठें बननी शुरू हो जाएंगी and you do not want expensive things to get ruined. I will be using that. Okay, a couple of drops. By couple I mean somewhere around 2 drops initially. अच्छा, एप्सम सॉल्ट है ये, मैंने अंदाजे से डाला है. आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ तक फिल कीजिए, इसको वापस अपने बोल में कंप्लीट वापस डाल दीजिए एंड देन स्टार्ट मिक्सिंग योर कलर्स एंड एवरीथिंग slowly please. This is a very boring process, I am warning you in advance, but I do not want the salts to absorb my energies. That is not a food color. These are soap dyes. I do not recommend using food colors, please. Soap dye. इसको थोड़ा सा और रेड करेंगे. Two more drops. Again. If you want, you can make it more red. और red कर दूं या ये ठीक है? Is this fine?
It's fine. Okay. Now I will be adding a couple of drops of my rose essential oil. By couple I mean 2 drops, because ये प्योर है और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो मुझे नहीं चाहिए कि वो इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस मेरा सर दर्द कर दे. 2 drops of rose essential oil I have added. Please make sure you add things slowly and then increase the quantity, because if you अगर आप एक साथ ही सारा डाल दोगे तो आप ज्यादा को कम नहीं कर सकते, लेकिन कम को ज्यादा कर सकते हो. Okay, now adding a few rose buds. ठीक है. If I want, I have used just one kind of salt, that is Epsom salt. The blends and the mixtures की कौन से salts कितने रेशियो में add करने हैं वो सब मास्टर क्लास में सिखाऊंगी. Okay, should I add a few lavender to this? पर बहुत weird लगेगा because everything is just red and rosy. Of course you can use, I am using only one salt. Okay, I will start pouring my salt. If you can see, you cannot use lemon with your salts. Sorry, that's a strict no. Okay, as I told you, funnel का mouth बहुत ज़्यादा बड़ा है और वो वैसे ही बहुत मुश्किल से इसके अंदर एडजस्ट हुआ है. So I have to push it back with the back of the spoon. Okay, a very slow process and boring too, but the end result and the soothing qualities of essential oil, will calm your senses. Okay, let's just wind up with this. I will secure my lid tightly, and this is my salt. These are the 3 salts you can see. Lavender, rose, rose again. But again, I have mixed different kinds of essential oils to each one of them. This is again a different essential oil. This is rose, which I have made in front of you. This is rose, but the essential oil in this is peppermint. This has eucalyptus. Okay,